हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण समस्त को सरते शिक्षण स्वागत। आज आम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किसी क्वेश्चन देखा जोटा कि काली आपण ऑलरेडी मु क्वेश्चन दे दीची से तार आंसर वाला डिस्कशन करबा। ओके, मु बर्तमान स्क्रीन शेयर करूची। स्क्रीन शेयर करिया पूर्व तापर मागे आपण माननकु मु हम टेलीग्राम चैनल शेयर कर दोची। ओके, टेलीग्राम चैनल आपण माने जॉइन करंतु। जे भी पीडीएफ चाहते मु डेली 50टा क्वेश्चन आम ग्रुप रे अपलोड करूची टेलीग्राम चैनल शरत एजुकेशन बोली आपण माने टेलीग्राम चैनल सर्च कर परिबे। ओके, शरत एजुकेशन बोली आपण माने टेलीग्राम चैनल सर्च कर परिबे, जोटी कि आपण माननकु डेली हमर 50टा एमसीक्यू रो पीडीएफ मिल जिवो। ता सहित आपण माने जदी बुक्स नवा चाहते ओडिसा एसएसबी हमर लेक्चर बुक। ओके, सॉरी उल्टा देखिए ये बुक जब नवा चाहते ताने आपण माने मते कांटेक्ट करिवे। ओके, टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु, सेठी मोर डिटेल्स कांटेक्ट मिल जिवो। आ बुक्स नवा चाहते जदी कांटेक्ट करंतु। पुनी अल्प दिन भीतर हमर आ गोटे बुक्स आसीबार अछि जोटा कि मु आपन को हम यूट्यूब चैनल ही समस्त जणे देबी, बहुत जल्दी जणेबी। ओके, जोटा कि आपण मानको एग्जाम रे प्रिपरेशन करिया पे बहुत किछ हेल्प करिवो। हमर जोटा कि हमर एसएसबी लेक्चर पई हो किबा एसएसबी कोन हो हमर जो पीजीटी एग्जाम हो, दीटा एग्जाम पई आपण मानको से निश्चित हेल्प करिवो। ओके, मु बर्तमान आपन क्वेश्चन शेयर करछि। काली रो क्वेश्चन 10/6/2024 रो क्वेश्चन आज रो क्वेश्चन आपण मानको इवनिंग रे मिल जिवो। आपण माने केही व्यस्त होंतु नै, क्वेश्चन निश्चित आपण मानको मिलबो। ओके, मोर एटा मो तरफ मु चिंता करछि आपण मानको क्वेश्चन प्रोवाइड करिया पे, तेनु करी आपण माने केही व्यस्त होंतुनी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। आपण माने निश्चित क्वेश्चन देखि पड़तुवे। ओके, हां गुटे चेक कर दिया क्वेश्चन ठीक अछि कि नै। क्वेश्चन आसुची। ओके, जदि किछि साउंड रे वॉइस रे किछि प्रॉब्लम होछि आपण माने कहि परिबे मते। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि देखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नै कि इनडायरेक्ट मेथड आपण माने जानचंते नै जानना। देखो, इनडायरेक्ट मेथड ता हला जोथरे कि आमे कोन करथांती, हमर जो एटा किमती बारे हमर जो नेट प्रॉफिट अछि, नेट प्रॉफिट रो हमर कोन हिता है ना, हमर जते एक्सपेंसेस गुडा कहिते तादर ऐड करा जाय। आउ जोरा बेनिफिट्स गुडा हिता आउ नॉन कैश आइटम जोरा रहले ताको कोन करा जाय, लेस करा जाय। ओके, ताने जे हमें कोन बारिबो इनडायरेक्ट मेथड बार कर परिबा। एथे कोन ऑप्शन देइचे, टू डायरेक्टली directly calculate cash inflow and outflow to reconcile items on the balance sheet to meet the to net income to ignore net cash transaction to simplify the cash flow statement. It is our answer about to reconcile the balance sheet. It answer about to reconcile the balance sheet to net income हो नहीं कि हमर आंसर एटा हो। एटा हमर किम जानिबे देखो कोन कहला हमर जो ए जो मेथड्स अछि स्टार्ट्स हम किमती स्टार्ट करिवा माने मन रखो तो इनडायरेक्ट मेथड हमर जो रहला कोन रहला कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमर तीनटा फॉर्म अछि नै कि तीन गोटे रहला कोन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, गोटे रहला फाइनेंशियल एक्टिविटी, आ गोटे कोन आउडे के जानछ ता कमेंट करो। ओके, मु दीटा कह दिला आउडे के कमेंट करो। देखो आ एथरो कोन होची आउ रहला दीटा मेथड रहला, गोटे रहला डायरेक्ट मेथड, गोटे रहला इनडायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड हम कोन करनते, डायरेक्ट हमर जो कैश ट्रांजैक्शन होइता ताको हमें एंट्री करथांते एडजस्ट करिकि ताको हम फाइनल केते बैलेंस हैला माने केते फाइनेंस कैश इनफ्लो हैला कैश आउटफ्लो हैला एटा हम देखथांते। किंतु एथरा आ गोटे भी मेथड अछि जोटा कि इनडायरेक्ट मेथड अछि, जोथरे हम कोन करा जाय हमर एथरे जो मेन थाला बैलेंस शीट आउ इनकम स्टेटमेंट हैला। बैलेंस शीट आउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमर नेट जो नेट इनकम टा बाहरथिबो माने कोन प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो नेट इनकम टा बाहरथिबो ताको आको फास्ट नबा।
ओके इनकम स्टेटमेंट ताको आगे फास्ट नवा देन ताको एडजस्ट करबा कोन चेंजेस इन बैलेंस शीट जो चेंजेस इन हितो ताको आनि कि हमें इनकम जो फाइन हम कोन नेट प्रॉफिट नेले ता सहित ताको एडजस्ट करबा केमि करबा कैश फ्लो affect but not कौन कहूँ balance sheet account that affect cash flow affect but not income से account को नबा such as जदि कहବାକୁ चाहिए such as the changes in accounts receivable accounts payable inventory ये सब गुड़ाक कौन होता है हमर नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो को affect करता है कोरा कि accounts receivable accounts payable inventories आउ जदि अदर नॉन कैश आइटम कहबे नॉन कैश आइटम रे कोन रहइबो हमर डेप्रिसिएशन रहइबो amortization रहइबो एंड ओके आउ एडजस्ट फॉर आउ जदि किछि कहबे गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो सेल एसेट कोन गेन लॉस है सेगुरा भी तादेर हम कोन करबा तादेर एडजस्ट करबा the indirect method कोन करे provides in the indirect method provides a clear link between the company's profitability हला हम कोन करछि जो indirect method जे हम कोन प्रोवाइड करबो clear link between the company's profitability कोइ परबा किबा नेट इनकम ता कोइ परबा एंड द कैश जनरेटेड फ्रॉम द कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमर जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ सब रहला तार जो कैश जनरेटेड ता जो हम जा होछि सेटा को हमें परबा नै दिस आउ जो रिकंसिलिएशन मेथड्स रहला इनडायरेक्ट मेथड रहला कोडी यूज हेल्प्स अस to financial understand the difference between the company's reported profit and actual cash flow generated from operating activity thereby the operating insights और company's liquidity operational efficiency ये सब काम हमको क्या हेल्प करता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेल्प करता है और इनडायरेक्ट मेथड भी हेल्प करता है ओके आउ जदि आमे फोकस करिबा वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स को नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड द इनडायरेक्ट मेथड प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव हमको इनडायरेक्ट मेथड कौन प्रोवाइड करिबा ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू टू हाउ हाउ कैश इज जनरेटेड एंड यूजेस यूज्ड इन डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओके बुझियला आपण माने एटा बुझि परियो निश्चित इनडायरेक्ट मेथड को डिटेल्स कहि देली देखो इनडायरेक्ट ता माने कोन हला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ने कोन अछि देखो how does the how does the cash flow how does the cash flow statement differ from the income statement ये कौन कहला cash flow statement रो different हमको पचाला ओके different हमको पचाला ये ऑप्शन कोन देला it includes further transactions it measures the performance of a company over a period of time it includes non cash transaction it only focus on cash transaction देखो आमे जति की जानचंती हम कोन करचंती आमे जतबेले कैश फ्लो स्टेटमेंट करचंती हेतबेले आमे कोन करचो ओनली कैश ट्रांजैक्शन आ नै थांदी किंतु समहाउ आमे जो किछि नै थांदी जोटा कि नॉन कैश आइटम भी नै थांदी जेमति कि हमरो क्वेश्चन आमे कोन देखले डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड कला बेले आमे कोन कोन नॉन कैश आइटम भी आमे नौचंती ओके से जदि आमे ताको डिटेल बुझियाउ चाहिबा केमति बुझिबा देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट केमिति डिफर करछि इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट इन दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द कैश ट्रांजैक्शन हला एक्सक्लूसिवली हमें कोन करछंती कैश ट्रांजैक्शन फोकस करछंती इन अनलाइक देखियो हमें इनकम स्टेटमेंट कोन होछि व्हिच मेजर्स कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी हमर जो इनकम स्टेटमेंट रहला कोन से करछि कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड बाय इंक्लूडिंग नॉन कैश आइटम्स एंड like depreciation and the like depreciation nahi non cash item like depreciation and the balance sheet which provides a snapshot of a company's asset liability and equity at a specific point of time nahi हम कोन करछि हमर बैलेंस शीट कोन होछि एटा हम जानि परछंती आ कोन हमर जो रहला प्रॉफिट लॉस रहला से हम कोन दोजा हम जानि परछन नै कि द कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जदि एटा डिवाइड करे डिवाइड्स इनटू द थ्री सेक्शन जोटा ऑलरेडी म कहि सारछि पचारछि आपण माने कोन कोन हमर जो थ्री सेक्शन अछि आपण माने जो जानि चंती ता कमेंट करंतु ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउट रहला फाइनेंस एक्टिविटी नै कि ओके तार नेक्स्ट देखो आ जदि कहबा डिस्टिंक्शन देखिबा क्रुशियल ए जो डिस्टिंक्शन ता हम पे भी क्रुशियल अछि because cash flow analysis helps stakeholders to understand how the company manage its cash and fund operation invest in the business and return to the stakeholder हला जो एथरे जो फंड ऑपरेशन होची फंड इन्वेस्टमेंट होची आ रिटर्न्स आसुची एरा सब हमें कोथुर जानि परिबा हमें ए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जानि परिया नै कि इट प्रोवाइड्स इनसाइट इन द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी आ कोन प्रोवाइड करची कारण कैश कथा से प्रोवाइड को कैश ऊपर डिपेंड करची नै आ से हम लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो हमको प्रोवाइड करिवो रिवीलिंग व्हाटएवर whether it can generate enough cash
हम केते इनफ कैश करछी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, हम जेतु कैश फ्लो स्टेटमेंट गोटे पीरियड भीतर जाए बेसिकली शॉर्ट टर्म पे हिते आ लॉन्ग टर्म में भी हमर इन्वेस्टमेंट केमती हे परिबो ता पे भी हमको से फ्लेक्सिबिलिटी हमको दोछि नै कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following adjustment is typically made in the indirect method for calculating cash flow but not in direct method? कौन कहला ए मेथड कौन कहला which of the following adjustment typically made in the indirect method हला of calculating cash flow but not in the direct method। direct method कोटा हुए नहीं हमको पचाला बुझला। changes in inventory, cash received from the customer, cash paid to supplier, depreciation expenses एटा कोटा हुए देखो ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कहला जोटा कि हमें डायरेक्ट कला बेले करते कि नियंती नहीं किंतु डायरेक्ट कला बेले चेंजेस इन इन्वेंटरी नहीं थांती, कैश रिसीव्ड नहीं थांती, कैश पेड भी नहीं थांती नहीं कि एरा नहीं थांती हम डायरेक्ट बेले कारण डायरेक्ट बेले हमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन नहीं थांती जेतबे इनडायरेक्ट करबा सेतबे हमें डेप्रिसिएशन नबा आउ अदर चार्जेस भी नबा जोटा कि नॉन कैश आइटम रे जोटा भी थाए। ओके, जदी सेटा हमें बुझियो चाहिबा नेक्स्ट एटा तो बुझियल ऑलरेडी हम कथा हिसल नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा in the cash flow statement which section is most likely to affect by companies issuing bonds and the public। in cash flow statement which section is most likely cash flow statement पचाला which section कथा पचाला which section most likely to be affected by the company issuing bonds the company। okay, issuing bond public sorry the cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financial activity और non cash activity रहला कोटा भीतर माने चारटांग अछि हमर कैश फ्लो स्टेटमेंट रे मेन ए तीनटा गला ता सोर्स डायरेक्ट सोर्स एटा इनडायरेक्ट सोर्स नॉन कैश एक्टिविटी ततरा आडे जिवो नै कि। देखो एठी हम क्वेश्चन टा कोन कहि एक्चुअली बॉन्ड कथा कहि कंपनी कोन इश्यू करूची बॉन्ड इश्यू करूची बॉन्ड इश्यू कले कोन मिलबो कंपनी को फाइनेंस मिलबो ता माने एटा कोथरा आसीबो सिंपल दिन से गला फाइनेंस एक्टिविटी गला। ओके बुझला ना एथरे किस डाउट रहला एथरे किसी डाउट नथियो जेमति जदी आमे ताउ डिस्कशन करिया चाहिबा देखो जदी आमे ताउ डिस्कशन करिया चाहिबा कोन करबा कहला when a company issue bonds to public it is am question is bonds to public the cash received from the issue is classified as a financial activity नहीं कि financial activity ताको हम कोन करबा activity करबा आउ this section reflect cash flow related to the company's debt equity financing debt and equity financing activity including proceeds from issuing debt equity instruments and the repayment of borrowings and dividends to the shareholders ए सब दिन से कोन करछि ऐड करछि कोन ऐड करछि आउथरे करबे आउथरे this section cash flow related to company's debt equity financing aurela issuing debt our instruments equity instruments repayment of borrowings repayments of dividends to dividends to shareholders। okay तेन करी ए सब दिन हमर कोथरा आसीबो ऑपरेटिंग ना फाइनेंसिंग ना कोथरा आसीबो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे आसीबो। ओके बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो which of the following activity would be the category under cash flow statement categorize कराउची categorize ओके कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉरी अरे ये कौन okay in payment to suppliers receipt from customers purchase equipments dividend paid to shareholder एटा आंसर कोन होबो आंसर आर कोन होबो आंसर होबो परचेज ऑफ इक्विपमेंट हमर आंसर कोन हिजो परचेज ऑफ इक्विपमेंट हिजो देखो कोन कहला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जेतबे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो होता है includes cash transaction नहीं कि एथरे कोन होते includes cash transaction that's investing हम इन्वेस्टमेंट करूचंती कोठी करूचंती बाहर जाई करूचंती किबा हम हेडी प्रॉपर्टी करूचंती किबा प्लांट करूचंती के इक्विपमेंट्स करूचंती किबा लॉन्ग टर्म एसेट किछि करूचंती ओके आ किबा अलवा कंपनी मानकर जाके ताको स्टॉक्स किनुचंती ताको बॉन्ड्स किनुचंती ए सब ताको सिक्युरिटीज किनुचंती ए सब हमर हला कोन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। okay जति कहबा therefore purchase of equipments would be categorized under the cash flow investing एरा सब आमे कोन करबा cash flow investment activity कर this sections of cash flow statement reflect cash inflow and outflow associated with the acquisition and disposal of long term assets that are not indicated for resale
that are not intended to resell, जोटा कि immediately आमे जोटा resell करिबा नाही, ओके immediately ताको resell करिबा नाही, सेथिरे आमे इन्वेस्टमेंट करथान, जोटा कि तेन को हेटा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करे, इन्वेस्टमेंट जो करा जाय तार शॉर्ट टर्म पई करा जाय ना, हेटा लॉन्ग टर्म पई करा जाय, जेहेतु आमे ऑलरेडी आमे कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन भाग व्यक्त कर रखिसंती, गोटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, गोटे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आ गोटे कोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके ऑपरेटिंग ला करंट पीरियड, फाइनेंसिंग ला सीबी करंट पीरियड, आ रहला इन्वेस्टमेंट ला लॉन्ग पीरियड, दीटा करंट पीरियड पे दीटा रखले, फाइनेंस पई कोन लॉन्ग टर्म पई गोटे रखले, तेनु करी आमे जेहेतु डिवाइड करी ताको रखिसंती, तेनु करी जत इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आसीओ माने डायरेक्ट आप मन माइंड रे आसीबा जरूरी, आमे लॉन्ग टर्म पई इन्वेस्टमेंट करिसंती, ओके बुझे गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the significance of changes in accounts receivable in cash flow statement, sorry what is the significance of changes in accounts receivable in cash flow statement, कौन हबा जरूरी, देखो एटी हमर आंसर कौन हबो, आंसर हबो हमर आंसर हबो ए हबो को गला, they are added back to the net income in the indirect method, मतलब what are the significant changes in accounts receivable, चेंजेस इन अकाउंट्स रिसीवेबल कैश फ्लो, जदि हमर अकाउंट्स रिसीवेबल लो कि चेंजेस आसुची ताने हम डायरेक्ट मेथड यूज करबा ना इनडायरेक्ट मेथड यूज करबा, ताकू हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करबा, ओके एटी आउ अदर ऑप्शन, दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम इन द डायरेक्ट मेथड हबनी छाड़ा पटिला, द रिप्रेजेंट ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम द कस्टमर्स पेइंग ऑफ अ क्रेडिट अकाउंट, नाही कस्टमर्स पेइंग अकाउंट कोन पे हबो हबनी, द they indicate changes in the company's profitability, नहीं indicate changes in profitability हाँ करूचन समाह करूचंती, but it's हमर जो ऑप्शन रहला, हमर ऑप्शन ए रहला, they are added back to the net income in the indirect method, this is the most correct answer, देखो changes in accounts receivable have a significance in the cash flow statement because they reflect the timing of cash received from customer, हम कौन करछे, हम एटा कौन रिफ्लेक्ट करछे, टाइमिंग, they reflect the timing of cash receipts from customer, देखो कैश एटा रिसिप्ट होची, इन रिसीवेबल माने रिसिप्ट होची, एटा सब मन रखियो, इन द अकाउंट्स रिसीवेबल कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट ई रिसीवेबल माने कोन होची, हमर इनक्रीज होची आसुची हम पाखु, in the indirect method the calculation of cash flow changes in accounts receivable are added, जेतल changes in accounts receivable are added back to the net income, जो net in आमे कोन मन रखियो कि जेतो आमे इनडायरेक्ट मेथड करछंती सेतो आमे कोन रहला, जो हमर जो आमे नेट इनकम रु बाहर करथांती ना, नाही नेट इनकम जति बाहर करबा हमर कैश रिसीवेबल जति होची, माने कैश रिसीवेबल जति होची कोन करबा त इनकम सहित ऐड करबा, in this indirect method calculating cash flow changes in the accounts receivable are added back to the net income to arrive at the net cash provided by the operating activity. This adjustment is necessary because the indirect increase in accounts receivable indicate that sales have been made on credit, okay, resulting in revenue recognition on the income statement but not yet receiving cash, जोटा कि हमर को क्रेडिट रिसीव हेतला बट जोटा कि हमर ओके receiving in, therefore adding back to the increase in accounts receivable and net income adjust for the portion of the revenue that has not yet been collected, okay next question jiba 7 number कहला, how does the cash flow statement aid in the cash flow statement aid in predictive company's future financial performance by analyzing changes in asset value, by providing insight into company's revenue, by assessing the company's ability to generate cash, to find its operation, by estimating the company's long term investment, कोटा हवा आंसर कोटा हवा, the question बोल से बुझो, how does the cash flow statement aid in predicting company's future financial performance, एठी हमर आंसर कोनटा हवा, एठी हमर आंसर हवा, आंसर एटा तो हबनी, बी कोन हबो, by assessing company's ability to generating cash from to find operation, एटा हमर आंसर हबो, ओके एटा हमर आंसर हबो कोन पई, कारण देखो एठी हम कोन पचारची
कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आम देखा चाहते आम कौन देखा चाहते कंपनीज फ्यूचर फाइनेंस देखा चाहते तेणुक the cash flow statement aids in predicting a company's future financial performance by providing insight into its ability to generate cash to the funds to generate cash to to fund its operation. Okay. Generate cash to fund its operation. By analyzing cash flow statements, stakeholders can assess the company's liquidity, solvency and operational efficiency. कौन करेंगे स्टेकहोल्डर माने कौन करेंगे can assess company's liquidity, solvency and operational efficiency, which are crucial factor for its essential and sustainability and growth prospects नहीं कि एटा को आम वे अनुसार कौन कहला कैश फ्लो स्टेटमेंट एड इन प्रिडिक्टिंग कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जदि बाय असेसिंग कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड इट्स एंड टू रहता तो माइंड अवेलेबल इन कह देता ओके बाय असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश टू फंड इट्स ऑपरेशन देख एटा से कौन कहउची फ्यूचर कथा कहउची क्वेश्चन हम कौन कहउची फ्यूचर हाउ डज कैश फ्लो स्टेटमेंट एड इन प्रिडिक्टिंग ए कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम देखिबा एटी कोन का फ्यूचर रे हमरो जनरेट कैश केमति हमरो जनरेट होउची फंड्स केमति जनरेटेड होउची ओके से दिन सबरा हम देखुछन नै कि बुझेला ना डाउट रोच मो आशा आपण मानो डाउट रो न तुम जोटा कहउ चाहूची आपण माने निश्चित बुझ परबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मेथड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सरला ये सरला हमर कोन कैश फ्लो स्टेटमेंट सरला प्राय ओवरऑल हम डिस्कशन कर दे कैश फ्लो स्टेटमेंट एपर आछला रिडक्शन इन कैश एटा को पाठ आसीला हमर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आछला कौन हम आंसर स्ट्रेंथनिंग वर्कफोर्स एफिशिएंसी एनहांसिंग ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इंप्रूविंग फाइनेंशियल पोजीशन कौन हम आंसर आ इंक्रीज शेयर होल्डर एक्टिविटीज सिंपल दिनसा हमर आंसर हबो सी हबो नहीं कि एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इंप्रूविंग कौन इंप्रूविंग फाइनेंशियल पोजीशन एटा हमर आंसर पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिडक्शन कर हम कौन कर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर कोथरे इंटरनल आम जो आम जो कंपनी इंटरनल कि दी प्रकार एक्सटर्नल कौन रिकंस्ट्रक्शन कर परिबा गोटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर परिबा गोटे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर परिबा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रे हमर बहुत गुडे मेथड अछि एक्सटर्नल मेथड भी बहुत गुडे मेथड अछि ओके तादरे कौन हमर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कौन मेथड अछि आपण माने ता कमेंट करंतु आउ ताको हमें पुनी आमे आउ गोटे वीडियो को करबा जोथरे कि आ गोटे जोथरे कि हमर अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन आउ जो अलवा जो यूनिट कोनटा रहला अमालगमेशन ऑब्जर्वेशन रिकंस्ट्रक्शन जो तीनटा पॉइंट अछि एटा सिलेबस टा सिलेबस देखि कहले लोके अमालगमेशन ऑब्जर्वेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन जो जा पाठ अछि ताको हमें वन बाय वन डिस्कशन करबा देखो हमर क्वेश्चन ने कोन पचारिबो हमको क्वेश्चन ने कोनोसी हमको मेथड्स ये पचारिबो माने सॉल्व करिया पे प्रॉब्लम हमको दबने हमरो जो मेथड्स गुडा को से देजी जो मेथड अमालगमेशन हो ऑब्जर्वेशन हो रिकंस्ट्रक्शन तीनटा मेथड तीनटा चैप्टर रो कौन पाठ अच्छे एक्चुअली तादेह जो प्रति मेथड कौन यूसेज अच्छी तार बेनिफिट्स गुरा कौन अच्छी तार अजम्पशन कौन अच्छी से हमको क्वेश्चन ने पचारे ओके से हमको जानिया दरकार ये कौन पचारा ये पचारा रिकंस्ट्रक्शन मेथड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तार ऑब्जेक्टिव कौन पचार ओके ये क्वेश्चन आम परीक्षा आसो तेणुक देख ये कौन कौन रिडक्शन ऑफ प्राइमरी मेथड कौन एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस आमर जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस गुरा होची ताको कौन कर एलिमिनेट करबा इंप्रूविंग फाइनेंशियल पोजीशन कौन इंक्रीज करबा जरूरी ओके तो बुझेगला नेक्स्ट क्वेश्चन जा बाय रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल हम जदी रिड्यूस करबा बाय रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल द कंपनी कैन एलिमिनेट और ऑफसेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो शेयर कैपिटल जदी किछि प्रॉब्लम हो जे हमर कंपनी किछि प्रॉब्लम हो जदी शेयर कैपिटल लेके अधिका शेयर कैपिटल हे छी हमर कोन होची हमर डेब्ट इक्विटी कमी जाई छी हम कोन होची करंट एसेट रे किछि प्रॉब्लम होची जोटा कि ताम कोन करबा रिकंस्ट्रक्शन करबा जरूरी कंपनी कैन एलिमिनेट एंड ऑफसेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस by which may have result from the operating losses, impairment changes or advisory other advisory financial events नहीं कि other adverse financial effects हे परियो
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रेशनलाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल मेथड्स, रेशनलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन मेथड, इट कौन होगा आंसर, असेस कैंसलिंग, cancelling a portion of a company's share capital, reorgan कौन लिखा है, renegotiating loan term with the creditors, assessing and streamlining the business operation, adjusting the company composition of the company's share structure, ये सब देला हमर चारटा ऑप्शन देला, which proper which process is called sorry rationalization of operation method, rationalization of operation method पचारला हमर एटा आंसर हबो assessing and streamlining the business operation, आंसर कौन, assessing and streamline the business operation, आमे assessing करबा streamline करबा business operation को कोन करबा streamline करबा। ओके, जदी करियो चाहे केमती एटा को ए जो मेथड्स रहला और रेशनलाइजेशन मेथड्स जो टा देछि हमरो जो कांसेप्ट टा देछि ताको केमती करे, इट इन्वॉल्व्स assessing and streamlining the business operation to improve efficiency and reduce cost and enhance profitability, कौन करे, to improve efficiency, reduce cost and enhance profitability से फोकस देता है, तीनटा पॉइंट रे से फोकस दे, रेशनलाइजेशन ऑपरेशन कोथरे फोकस देता है, improve efficiency करिवो, reduce cost करिवो, enhance profitability करिवो। This process typically entail comprehensive review, entitles a comprehensive review and analysis of a company's operation, including production process, supply chain management, distribution distribution channels, organizational structure, ये सब जिनस गुड़िक कौन करियो से फोकस करियो। जेतबेले ए मेथड आमे रेशनलाइजेशन ऑपरेशन करंती सेता हम कौन करंती, रेशनलाइज करतंती, माने कोन ताको इवोल्यूट करतंती, दिस टिपिकली कौन करती, रिव्यू एंड एनालिसिस कागु से करिवो, हमर कंपनी ऑपरेशन करिवो, प्रोडक्शन प्रोसेस को करिवो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करिवो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को करिवो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ए सब जरा को कोन करे से रेशनलाइज करे। ने जदी आ ऑब्जेक्टिव कोन, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी, हमर जो इनएफिशिएंसी अछि जो सब जंग सेक्शन में इनएफिशिएंसी देखिवो, आओ कोन कहि से वाटा मन पड़ने, रिडंडेंस, सॉरी रिडंडेंसी, सॉरी से जो वाटा जदी आपण माने के जानि चंदे मते मेसेज करंतु। ओके, ग्रुप रे शेयर हमरो ये करंतु। ओके, रिडंडेंसीज, ओके रिडंडेंसी वाटा माने पड़छि, and areas of auxiliary objective to identify inefficiencies, areas of under performance जोटा कि हमर जो performance under performance is within the business, and implementing the measures of address them efficiently, ताको effectively address करिया पले हम कोन करिया पड़ियो, जो हम redundancy उरा अछि किबा इनइफेक्टिव अछि आ इनएफिशिएंसी उरा को अछि, अनस्ट्रक्चर जो अछि, अननेसेसरी यूसेज जोरा जो अननेसेसरी सप्लाई जो चली छी, प्रोसेस उरा प्रोडक्शन प्रोसेस रे भूलभाल चली छी, सेउरा को हम कोन करिया पड़ियो, एनालाइज करिया पड़ियो। ओके, बहुत किछि मु कहि दउछि बोधुए। ओके, आपण मानकर दरकार बोली मु कहछि, देखो व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट, देखो एटी हम क्वेश्चन कोन पचला, प्राइमरी benefit of restructuring of debt कहछि, reducing operational cost, enhancing shareholders returns, strengthening financial flexibility, expanding market share। ओके, एटी कोन होबो, expanding market share कथा, सॉरी चारटा पॉइंट देला, एटी हमर आंसर कोन होबो, आंसर हो strengthening financial flexibility, कोन हे जबो स्ट्रेंथ, सी हे जो हमर आंसर strengthening financial flexibility हो, restructuring of debt, debt टा को रिस्ट्रक्चर करियो, कोन करियो, हमर प्राइमरी बेनिफिट्स कोन कहिबा, हमें कोन करियो, हमर जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अछि ता कोन करियो, स्ट्रेंथनिंग करियो चाहछन्ती, एटी कोन ए जो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग रहिला कोथरे इन्वॉल्व रहइबो, हम मॉडिफाई करबा, कोन मॉडिफाई, टर्म्स एंड कंडीशन जो हमर जो डेप्थ जेतल नउचंती, हमें हेतरे कोन कोचन ता जो टर्म्स कंडीशन हम अछि एग्जिस्ट करूची, आ डेप्थ ऑब्लिगेशन ने ता एलिवेट करियो, आ फाइनेंस डिस्ट्रेस को इंप्रूव करिवा, लिक्विडिटी को इंप्रूव कर एनहांस द कंपनीज एबिलिटी करिवा। ओके, हम कोन करिवा, फास्ट हम कोन करे, टर्म आ कंडीशन जो अछि डेप्थ स्ट्रक्चरिंग रे सेरा चेंज करिवा, आउ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रे कोन पई एलिवेट को ताको एलिवेट कर दवा, माने बाहर कर, इंप्रूव लिक्विडिटी रे कोन पई प्रॉब्लम आछला, हमर सॉल्वेंसी रेशियो रे कोन पई प्रॉब्लम आछला, लिक्विडिटी रेशियो रे कोन पई प्रॉब्लम आछला, ताको हमें एडजस्ट करिवा, एनहांस करिवा कोन कंपनी एबिलिटी, ताने दिस मे इंडिकेट
negotiation with the creditors and extend repayment schedules, reduce interest rate and कौन कह और कन्वर्ट डेप्ट इनटू इक्विटी डेप्ट इनटू इक्विटी जदि भी किसी आमर करवा दरकार डेप्ट गुड़िक ठीक ठाक होनी आम जो डिवेंचर अच्छी विभिन्न टाइप्स डिवेंचर अच्छी जोटा आम कन्वर्टेबल डिवेंचर थी कि कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर थी आम कौन कर इक्विटी को कन्वर्ट कर दे पारिबा आ अदर सिक्यूरिटी चाहिए जदि भांगी दे पारिबा ओके ताको रिस्ट्रक्चर कर दे पारिबा से ताहले हमर कहि पारिबो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्ट हे पारिबो जोटा कि आमर मान इमिडिएट आमर बिजनेस रो इमिडिएट ओके आज एति थाउ कारण आमर कॉल आसुची मो काम भी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो रे बाकी क्वेश्चन कवर करी थैंक यू जय जगन्नाथ।